Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Gem and Jewelry Export Promotion Council, welcome to India International Jewelry Show, IIJS Signature, and to India Gem and Jewelry Machinery Expo, IGJME 2022. Over the next 4 days, the Council will play host to the brightest stars and the most glittering gems that adorn the world of beautiful jewelry. You, ladies and gentlemen, the real jewels in our crown, our inspiration, our partners, and our true friends. Actor, director, and talk show host Aisha Tyler has said, "Bravery is the engine of change." 39 years ago, when the founding fathers of the council came together and launched the India Gems and Jewelry Fair in 1985, it was a brave decision. It was a leap of faith. But on their brave decision was built the foundation of what is today, the most dazzling showcase of Indian jewelry the world can ever experience. IIJS Signature and IGJME, a mega showcase that has grown astronomically in size and stature to become the iconic event it is today. This is, in fact, the 15th edition of IIJS Signature. We are honored to have as our chief guest Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Govt of India. Welcome, sir. He's joining us via video conference. Welcome, sir, to IIJS Signature and IGJME 2022. We are privileged to have as our guests of honor Shri Parshottam Rupala, Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. Welcome, sir. Srimati Darshana Jardosh, Honorable Minister of State for Railways and Textiles, Government of India. A warm welcome to you, ma'am. Shri Gopal Shetty, Honorable Member of Parliament. So welcome to this wonderful event. And joining us will be Shri Vipul Bansal. He'll be joining us shortly. IIS Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. A warm welcome to each of you, and thank you for gracing this landmark event. Let us now light the ceremonial lamp, invoking the blessings of the Almighty on IIJS Signature, on IGJME, and all of us present here. And joining us online at this auspicious moment, we have our distinguished chief guest, Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution, Textiles, Government of India. And to light the lamp in person, I shall request our guests of honor, Shri Parshottam Rupala, Srimati Darshana Jardosh, Shri Vipul Bansal, Shri Gopal Shetty, and our dignitaries from the Gem and Jewelry Export Promotion Council, Shri Colin Shah, Chairman, Shri Vipul Shah, Vice Chairman, Shri Sailesh Sangani, Convener, National Exhibitions, and Shri Sabyasachi Ray, Executive Director, Gem and Jewelry Export Promotion Council. शुभं कुरुध्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशः
Sir, we can hear you. Thank you, ma'am. Thank you, gentlemen, for doing the honors. It's now time to welcome our dignitaries. Ladies and gentlemen, I shall request our Chairman, Gem and Jewellery Export Promotion Council, Shri Colin Shah, to kindly felicitate our guest of honor, Shri Parshottam Rupala, Honorable Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. प्रोग्राम 11 बजे से चालू हो गया है। Thank you, sir. I'll request our Vice Chairman, Gem and Jewellery Export Promotion Council, Shri Vipul Shah, to kindly welcome our guest of honor, Srimati Darshana Jardosh, Honorable Minister of State for Railways and Textiles, Govt of India. I shall request Convener National Exhibitions, Gem and Jewellery Export Promotion Council, Shri Shailesh Sangani, to kindly felicitate our guest of honor, Shri Gopal Shetty, Honorable Member of Parliament. And we have a special felicitation. I'll request the Executive Director of the Council, Shri Sabyasachi Ray, to kindly felicitate Shri P.M. Parlevar, Director, Ministry of MSME. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I now request our very dynamic Chairman of the Gem and Jewellery Export Promotion Council, Shri Colin Shah, to welcome you to IIJS Signature and IGJME 2022, highlight our achievements and shared concerns, and acknowledge our chief guest, the Honourable Minister, when he joins us via video conference. Ladies and gentlemen, Shri Colin Shah. Thank you and good morning everyone. Welcome to this 15th edition of IIJS today. Extremely thrilled that the show is back in Mumbai. Like you know, 2 years we've gone through this pandemic and our industry was affected the most when the pandemic struck. But we've come back extremely strong and these physical shows are a testament to that. So further to what we were also talking in the morning is, what is the importance of a physical show? And while the world did go virtual and we did many things, I would say virtually, but, so Gujarati ma કહું તો means એક તો આજે તમને physically મળવાનું એક અમને, honor થયું. ને દિનેશભાઈ, thank you to you for, able to get everyone over here. અમારી માટે, of course, we come under Commerce Ministry. ને પિયુષજી પણ આજે અમારી સાથે છે વર્ચ્યુઅલી પણ એક મીન્સ આ ઓડિયન્સ માટે એક કહેવાની બહુ ખાસ નમસ્કાર પિયુષ બોલું છું તમને સબને નમસ્કાર ઓ થેન્ક યુ પિયુષજી ને પિયુષજી પણ ગુજરાતી બહુ સારું બોલે છે એટલે એ પણ એક સારી વસ્તુ છે પણ મીન્સ આખા ઓડિયન્સ માટે પિયુષજી સિન્સ યોર હિયર I must say very clearly that Parshottamji, Rupala and Darshana Ben are super, I would say, best friends of this industry, especially because they come from Gujarat and Surat. And Darshana Ben, especially તમારી માટે આજે આખા ઓડિયન્સને એક કહેવાની બહુ જરૂરી છે કે અમને બહુ હેલ્પ કરે છે. જ્યારે પણ કંઈ પણ અમારે મદદ જોઈતી હોય તો Darshana Ben is always there. Having said that,
Piyush ji must, thank you for joining us, and thank you, all of y'all for coming early this morning to Goregaon and blessing all of us with your presence. But the government has given us a $50 billion target, export target for next year. We'll reach close to $40 billion this year, which, we have 2 more months, and the industry is working very hard, and March is always traditionally a strong month. So we're very hopeful that we'll be close to 40. And during this journey of coming back from the pandemic and even reaching this 40 and aiming for 50 next year, Commerce Ministry under Piyush ji has been, I would say, like working like partners. And we joke about this at review meetings also, that sometimes we forget whether who is the private sector, because the public sector today is working as the private sector. Minister himself has his weekly track sheet, and he's reviewing with all the concerned officers on what is done, what is not done. We have a sector-wise review happening every month. So the policy support that we've got is, and I guess in the budget, especially if you take, the help that we got due to Commerce Ministry and of course the Finance Ministry, is the reduction in diamond duty from 7 to 5. So considering we have a lot of diamond manufacturers, traders, I hope you all are happy enough to give a round of applause to the ministry. Secondly, for a lot of our MSMEs, the emergency credit line, the guarantee scheme which was there, has been extended to March 23, which is really going to help everyone, the one more year that we've got. For all our gold jewelry manufacturers, and that was one of their long-standing complaints, that the bank guarantee they have to give to get import of gold is blocking a lot of working capital. So now they can give personal surety bonds instead of the bank guarantee. This will free up a lot of capital. The SEZ Act, which is coming up, and we've not had reforms on SEZs in the last 15 years. So that will really help, again, energize the SEZs. 35% of our exports are SEZs. So that will really help all the manufacturers over there to, again, be able to compete with the other SEZs. And last but not the least, since you all are at IIJS, I must tell you all that, and considering you all are part of various committees and everything, the e-commerce policy was a long desired stand of this industry, because that will help, I would say, all the districts, and further to Prime Minister's vision of making every district exportable. The e-commerce policy will allow that to happen, because with e-commerce, what you need is speed and you need cost. And that new policy will take care of both for gems and jewelry sector. So again, round of applause for the government to listening to the industry and making this happen in a timely manner. Today, as we speak, and maybe this will be a historic moment for our industry and India and UAE relations in general, that as we speak, there is going to be a signing of the UAE FTA today. And our industry, luckily enough, will be one of the large beneficiaries. So, and I'm sure the Honorable Minister will speak about that, but this would be a game changer for our industry and help realize our industry, go to the next level of $50 billion. Of course, besides that, I would say the UAE FTA, the government is very actively working on market access with Canada, UK, US, Australia, some of our large gems and jewelry markets. So the duty tariff reduction in those markets, which of course help boost our exports and make us more competitive with China and Thailand. Further to that, we have the mega CFC in SEEPS coming up, which is going, I would say the work is going on full steam. And we should be ready by the ministers given us a deadline of May Day next year for the opening. And we can only say that we are working furiously towards making that happen. Besides that, the last missing part in our Bombay dream. So we have the Bharat Diamond Bourse, which has 3,000 offices. We have SEEPS, which has 200 factories, and the MIDC area, which has another 300 jewelry factories. But one of the industries which needed a special park and which will help consolidate the entire Zaveri Bazaar and Parel and many, many areas which are fragmented all over Bombay into a world-class infrastructure like BDB, will be the new Mumbai Jewelry Park. And Kirit Bhai over here is our chairman. And we are very excited that this will help make Mumbai the premier center for gems and jewelry globally, I would say. Besides that, another good news which has happened for our industry is the Gift City and the IIBX which has come up over there. So London Bullion Exchange was there, then Brexit happened, the pandemic happened, and the Shanghai Exchange has also come up as another counterpart to bullion trading. But India today has the opportunity of being, since we are the second largest consumer of gold in the world,
through this exchange in Gujarat, we can be the exchange of the world. So there is no reason why more and more gold will not be transacted. We will consume 1,000 to 1,200 tons. And besides that, we will also be a gateway to the rest of the world. So that's another game changer which the government has graciously agreed to. Besides that, sir, and about this exhibition, since we are at IIJS, it is, in some sense, an aggregator of the entire industry. So we have diamonds, we have diamond jewelry, plain gold jewelry, polki, silver jewelry, we have machinery pavilions, we have 15,000 visitors who come from all over India to visit this show. And it makes sure, so one is the business which gets transacted, but secondly, at the start of the year, it is the indicator of the sentiment. And once you all grace us with your presence and walk around, you will see the positive sentiment which this industry is going through. So with a little government support, there is no reason why we can't be the gems and jewelry capital to the whole world. This is one industry, like how, you have Switzerland famous for watches, you have France for perfumes and cheese. When you think of commodities like that, if you think of cars, you're thinking of Germany, BMW, Audi. So for gems and jewelry, we have an opportunity of being that to the world. That anyone thinks of gems and jewelry, they'll think of India. So that's the potential of this industry, and we thank the government for all their help. So thank you once again. Thank you for your presence, and best of luck all our exhibitors and visitors for having a wonderful show. Thank you. Thank you very much, Chairman Sir, Mr. Colin Shah, for that warm and cordial welcome and for so beautifully setting the tone for a richly rewarding IIJS signature and IGJME 2022. Through IIJS signature and IGJME, the Gem and Jewelry Export Promotion Council has transformed the face of the jewelry industry in India through a fresh and innovative approach, through a single-minded pursuit of excellence, and imbibing in each of us with the vision of a future that shines as brightly as the glittering jewelry we create. The magnitude of this entire exercise and this magnificent event is beautifully captured in the special edition of Solitaire International IIJS Special that commemorates this scintillating event. May I now request our guests of honor, Shri Parshottam Rupala, Srimati Darshana Jardosh, Shri Gopal Shetty and Shri Vipul Bansal, and the dignitaries of the days to kindly release Solitaire International IIJS Special in the distinguished presence of Shri Piyush Goyal, who has just joined us online. Okay, can we have a round of applause? I know you can't see too much from there, but you can follow it on the screens. Congratulations to the Gem and Jewelry Export Promotion Council and the Solitaire team for this wonderful launch. You will be able to get your copies of this and see just how beautifully they have captured the spirit of what IIJS and IGJME 2022 are all about. Ladies and gentlemen, welcome once again to our chief guest, Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution and Textiles, Government of India. I shall now request him to address us via video conference. Ladies and gentlemen, our distinguished chief guest, Shri Piyush Goyal, via video conference. Very much, Colin Bhai, for that very warm introduction and for the very good words you had for the government, for the Commerce Ministry, and more particularly for Prime Minister Modi's leadership in getting us a very good deal with the United Arab Emirates in terms of the comprehensive economic partnership agreement that will be signed today. Virtually, there will be an exchange
between His Highness the Crown Prince of UAE and Prime Minister Modi. And truly, this will be a golden letter day for the gem and jewelry industry. And I don't know whether it's a mere coincidence that you had this program today and the virtual summit is being held today, or whether this is a signal that we have great things in the offing for the gem and jewelry sector. My brother and colleague in the Union Cabinet, Shri Parshottam Rupala ji, my sister, my colleague in the Union government, and also the Honorable Union Minister for Textiles, Srimati Darshana Jardosh, my good friend and our Member of Parliament from my home city, Mumbai, Shri Gopal Shetty ji, all the other distinguished colleagues, both on the dais and off the dais, distinguished leaders of the gem and jewelry sector, ladies and gentlemen, I'm truly delighted to join the inaugural ceremony for India International Jewelry Summit, Signature 2022. The IIJS signature has truly become the signature event of the Indian jewelry sector and showcases its prowess to the entire world. The gem and jewelry sector is a prime example of the potential of Make in India, the potential of Brand India, as you rightly pointed out, Colin. And I do hope that in the years to come, we will have the world looking up to India, and anything that comes from India, of course, hallmarked, assayed, and with the guarantee of quality, will be the sure identity which will distinguish Indian jewelry from all the others. And just like you mentioned, the Swiss watches are defined by their Swiss origin. We'll have Indian gem and jewelry products defining the India story, the India capabilities. Our history is filled with tales of many precious stones which have been attributed many powers. In the Vishnu Puran, there is a description of Syamantaka gem, which had the power to bring prosperity and plenitude to the possessor. And therefore, jewelry is intrinsic to India and has also today become a status or a style symbol in society. Jewelry making skills have been passed down in Indian families since many generations, and many of our friends who are participating in this jewelry show also have seen generations in this industry. Due to this rich tradition, the beauty, charm, design, and expressiveness of Indian jewelry is truly unmatched. Just like poets write poetry, our goldsmiths have written fascinating stories with threads of gold, silver, and precious metals. Despite disruptions due to COVID-19, the GJEPC has channeled its entrepreneurial spirit to convert this crisis into an opportunity. You organized virtual trade events like Buyer-Seller Meets, E-International Gems and Jewelry Show, India Global Connect, webinars, and many more. These initiatives have helped the industry to bounce back quickly and gave a push both to domestic sales and exports. The IIJS signature is an important jewelry show, which I think is an institution by itself and caters to the sourcing needs of gem and jewelry retailers and wholesalers from across the world.
I believe you have 850 exhibitors participating in over 1450 booths with 14,000 pre-registered visitors, of which over 400 have come from overseas. And there are delegations from many countries like the US, UAE, Egypt, Nepal, Uzbekistan. I truly compliment the entire team which has put in all the effort in making this show a great success. The gem and jewelry sector is a strong pillar of the Indian economy. Our gold and diamond trade contributes about 7% to our GDP and employs over 50 lakh persons. The exports, as you rightly pointed out, already stand at 32 billion this year until January, and we are very confident that you will achieve a 40 billion export in the current year, which will be a growth of about 6.5% with respect to the pre-COVID period of 1920. I also believe that you are making efforts to achieve the original target of 44 billion. And I do hope February and March will help you to aspire closer to that target and help the country meet the ambitious and never before target of $400 billion of exports in one financial year. Under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India wants to make the gem and jewelry sector self-reliant. We need an Atmanirbhar gem and jewelry sector. And therefore, this will be a focus area for both domestic growth and export promotion. The budget 2022 has paved the road for the sector to grow and expand India's footprint in the global gem and jewelry trade. The reduction in import duty on cut and polished diamonds to 5%, the extension of the emergency credit line guarantee scheme for MSMEs up to March 2023. I believe over 90% of your units are MSME units. The acceptance of personal surety bonds in place of bank guarantee for import of gold, the replacement of the SEZ Act, on which we are working very closely with the Finance Ministry with a new liberalized SEZ regime, a simplified regulatory framework for e-commerce to come out in the next few months, which will facilitate gem and jewelry exports through e-commerce, ensuring that small retailers are able to ship their products overseas. You have given us a $800 US dollar per consignment kind of indication. We have taken it up with the Ministry of Finance and hopefully we'll be able to come to a resolution of your request soon. As you rightly pointed out, today evening, there'll be another reason for your sector to celebrate. It will be a gift that will ensure an expedited growth of this sector for many decades to come. I'm happy to note that GJEPC, with the support of the Ministry of Commerce and Industry, has been setting up common facility centers to improve productivity and quality of gem and jewelry products. We already have operational CFCs at Amreli, Palanpur, Junagadh, Visnagar, Coimbatore, Kolkata, Hyderabad, and Rajkot. I'm sure this will go a long way to help realize the goal of Make in India for the world and truly give us the benefit of the India-UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement, of which one of the biggest beneficiaries is certainly going to be your sector. Ladies and gentlemen, the time has come to aim to be a global champion in this sector by taking up bigger and bolder challenges, bigger targets, both in domestic production as well as in the export market. To achieve this, we need to build an agile mindset
looking for opportunities all across the world. In fact, creating new opportunities. I am glad to see such positive and buoyant energy. Even though we have connected through video conference, I can feel the enthusiasm in the room there and the passion amongst your stakeholders. As they say, nothing great in the world has ever been accomplished without passion. As I sign off, I wish every success for this mega event and hope to see many such successful initiatives in the future. તમને સબને મારી બહુ બહુ શુભકામનાએ અને આજનો ઇવેન્ટ આ શો બહુ જ તમને ઉત્સાહથી તમે જો કરો છો એમાં તમે સફળ થશો અને આ શો પૂરા વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધિ લાવશે અમારા સેક્ટર માટે આ મારી ભગવાનથી પ્રાર્થના છે. મારા કલીગ્સ દર્શનાબેન અને પુરુષોત્તમભાઈ તમારી સાથે રૂબરૂ છે ત્યાં અને મને વિશ્વાસ છે તમે મારા સેક્ટરથી તો જોડાવ છે તમારો પણ ગુજરાત તો જો તમારો જોડાવ છે એ ત્યાં રૂબરૂ તમારી સાથે છે અને તમને પ્રોત્સાહન માટે આપવા માટે અમારા બેઓ વરિષ્ઠ મંત્રી તમને બહુ જ સારી સમર્થન પણ દેશે અને આગળ ચાલીને તમારી સાથે આપણી પૂરી સરકાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને નેતૃત્વમાં તમારા સેક્ટર જોડે કંધાથી કંધા મળાવીને અમે કામ કરશું અને દેશનો વિકાસમાં તમારા યોગદાન વધાવશું. થેન્ક યુ. Sorry for any mistakes in my Gujarati. Thank you. Thank you very much, and a warm round of applause to our distinguished Chief Guest, Shri Piyush Goyal. Thank you, sir, for your kind sentiments, your good wishes for the success of IIJS Signature and IIJME, and for your never-failing support of all our endeavors. You truly embody the very best of what is exemplified by the Latin phrase, in virtute robur. Ladies and gentlemen, I shall now request Shri Parshottam Rupala, Honorable Union Minister of Fishery, Animal Husbandry and Dairy, to kindly address us. Ladies and gentlemen, Shri Parshottam Rupala. પુરુષોત્તમભાઈ તમારી આજ્ઞા હો તો હું નીકળી શકું? પુરુષોત્તમભાઈ મને આજની કાર્યક્રમ માટે તૈયારીયા કરવું છે, તમારી આજ્ઞા હોય તો નીકળી શકું? आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअली हमको मार्गदर्शन देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे हमारे कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सम्माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी. हमारे बीच हमारे साथी मंत्री गुजरात से हमारी जुझारू महिला नेता बहन दर्शना जी, हमारे मुंबई के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे नेता गोपाल शेट्टी जी, श्रीमान कॉलिन शाह जी, जिन्होंने बहुत ही विस्तार से आज के कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सामने रखी और गुजराती में बोलने का उन्होंने शुरुआत किया और पीयूष जी ने उसका समापन किया. मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज विश्व मातृभाषा दिन भी है. सो गुजराती में थई जाए आज ये दिवस है એટલે અનાયાસ આપ બંને એની ઉજવણીમાં ભાગ લીધો એ માટે હું પિયુષજીને અને ભાઈ કોલિનને
ગુજરાતીમાં અભિનંદન આપું છું અને કોલિનભાઈને આવો સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવા માટે પણ જીજેઈપીસીના ચેરમેન તરીકે ધન્યવાદ પાઠવું છું. ભાઈ શ્રી વિપુલભાઈ, ભાઈ શ્રી શૈલેષભાઈ, અમારા કિરીટભાઈ, અમારે નાવડિયાજી, પ્રવીણભાઈ, आप सौ भाइयों और बहनों, ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी का इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय शो का फिजिकली होना मेरे हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है आफ्टर इस पेंडेमिक. इस मंदी के दौर से जो देश और दुनिया गुजर रही थी, उसमें कहीं आशा और उम्मीद जगाने के लिए और उसमें गति दिलाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता थी. इसलिए मैं जेम एंड ज्वेलरीज के सारे लीडर्स को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया. वास्तव में ये सही हमारे प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया है. आप जेम एंड ज्वेलरीज को देखो तो इनका रॉ मटेरियल यहाँ नहीं बनता है, 100% इम्पोर्ट है अपना डायमंड सेक्टर. और जो फिनिश प्रोडक्ट है वो कंज्यूम भी नहीं होता है, वो सारा एक्सपोर्ट होता है. 94% अपना एक्सपोर्ट है. सो ये 100% मेक इन इंडिया का ब्रांड अगर किसी को देना है तो ये जेम एंड ज्वेलरी को हम दे सकते. और ये बहुत ही अपनी पुरानी इंडस्ट्रीज है और अभी जिस प्रकार से इसका ग्रोथ हो रहा है कि आप $40 बिलियन को क्रॉस करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं. इससे हमारे बहुत एवेन्यू खुल रहे हैं. पीयूष जी जो बता रहे थे कि हमारा यूएई के साथ जो ट्रेड में समझौता होने जा रहा है, वो आज शाम को इसकी घोषणा होने की है. मगर इस घोषणा से हमारे इस ट्रेड को एक बहुत ही बड़ा गेटवे वर्ल्ड के ग्लोब के लिए हमको मिलने वाला है. एक बड़े प्लेटफॉर्म के साथ हम जुड़ने वाले हैं और मैं मानता हूं कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट जेम्स एंड ज्वेलरी को मिलने वाला है. इसी के कारण इस ट्रेड समझौते से हमारे इस इंडस्ट्रीज़ को बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला. इस इंडस्ट्रीज़ को आप देखें तो डायमंड, गोल्ड और ये स्टोन्स जो हमारे जयपुर के हैं और स्टडेड गोल्ड का जो बिजनेस है, इन चारों डिवीज़नों को आप देखेंगे तो उसमें अपने अपने हिसाब से काम करने वालों की और कारीगरों की रोजगारी के साथ जुड़ा हुआ ये बिजनेस है. बहुत ही पुरानी कारीगरी है ये. नक्शी काम करना, पुराना जरी काम करना और उसमें से आर्टिकल्स बनाना. और जब से ये श्रृंगार शास्त्र की रचना हुई और ये विष्णु पुराण का उल्लेख हमारे पीयूष जी ने किया, मगर महाभारत का सबसे बड़ा झगड़ा स्वयंवंतक मणि को लेकर ही हुआ था. भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बड़ा चार्ज लगा था मणि चुराने का और उसी पे बड़ा महाभारत हो गया. इसी कालखंड से इसका आकर्षण रहा है. અને માતૃભાષા દિવસ છે એટલે તમને યાદ કરાવું કે અમારા તો ડાયરાની શરૂઆત થતી, જટ જાઓ ચંદન હાર લાવો ઘૂંઘટ નહીં ખોલું રે. એટલું બધું લોકપ્રિય આ ગીત હતું કે જેને કારણે ઘરેણાની અને દાગીનાની સમાજ જીવનમાં જે અસરો હતી એનાથી આપણે ઓતપ્રોત હતા. और ये एक साधारण परिवार से लेकर हर महिला के मन में उसके अति उत्तम इसकी कोई डिमांड हो तो ये मंगलसूत्र होता है, वो उसकी एक कामना होती है. और उसकी चूड़ी, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं कि वो हर हाल में उनको आकर्षित ही करती रहती है. ऐसी एक बेसिक ज्वेलरी के साथ
जुड़ा हुआ ये व्यवसाय, और उसी में अब नए आयाम आ गए, नई टेक्नोलॉजी आ गई। डायमंड में तो और भी वो डायमंड भी आ गए जो अभी यहाँ खदान से नहीं निकालने पड़ते हैं, यहीं बाहर ही बना लेते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्रीज पे आने वाला है, वो भी एक्सपोर्ट को भी इम्पैक्ट करने वाला है। और वे जैसे पीयूष जी बता रहे थे कि वित्त मंत्री ने इस बार जो कटिंग एंड पॉलिश डायमंड पे जो कट किया है, उसमें जो टैरिफ चल रहा था, उसी का भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस इंडस्ट्रीज को मिलने वाला है। जिस प्रकार से मोदी जी आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र लेकर हमारे देश के व्यवसाय को, हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं, उसके नेतृत्व में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में ये अब एक ऐसे माहौल में हम प्रवेश कर चुके हैं कि अब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे ग्लोब के, भारत के युवाओं के लिए खुल रहे हैं। सारे इंडस्ट्रीज के लिए इस बजट में अभी अभी जो प्रावधान हुए हैं, एक दो का ही मुझे जिक्र करना है। एक है 200 करोड़ तक के टेंडर होंगे किसी भी प्रोजेक्ट के, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज के, वो भारत के ही लोगों के हाथ में जाना है, उसमें विदेशी पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ये डिसीजन हो गया है। और एक वाइब्रेंट विलेज का कॉन्सेप्ट इस बजट में आया है। उनसे पूरे सरहदी गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो ग्रोथ, जिसमें रास्ते होंगे, बिजली होगी, पानी होगा, इंटरनेट होगा, ये सारे सरहद तक पहुंचाने का है। इसका मतलब ये हो रहा है कि डेवलपमेंट का हार्ट जो देश के बीच में से शुरू हुआ था, वो अब उनकी सरहदों तक छूने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। पूरे देश का जिस प्रकार से विकास के मॉडल को मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उसका मुकुटमणि ये जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है। इसके कारण इसकी चमक है, इसकी दमक है, और इनका बेनिफिट भी हमको मिल रहा है। इस अवसर पर खास करके भाई दिनेश भाई नावड़िया जी ने, मैं सूरत ही गया था, तभी से वो मुझे आग्रह करके इस इवेंट के लिए बुला रहे थे। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारे देश का कोई प्राइम इंडस्ट्रीज जो अपना शोकेस कर रहा हो, यहाँ रिटेलर्स भी है, यहाँ होलसेलर भी है, यहाँ देश के मैन्युफैक्चरर्स भी है, देश के बायर्स भी है, और विदेश के बायर्स भी है। और ऐसा मॉडल है यहाँ की 15,000 तो आपके बुक्ड विजिटर्स हैं, और अनायास जो लोग आएंगे वो तो अलग है। और मैं आपको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि पेंडेमिक को और कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल को पालन करते हुए ऐसे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए मैं कॉलिन भाई, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसे एक इवेंट करने से वो एक प्रकार से अपने को चैलेंज भी है कि ये करने से हमारी टीका भी हो सकती है, हमारे सामने ये भी हो सकता है कि ये सब आप भीड़ भाड़ करके क्या कर रहे हो। मगर आपने जिस प्रकार से व्यवस्था खड़ी की, जिस प्रकार से इस कार्यक्रम की भी गरिमा आपने मेंटेन की, उसी सारी चीज़ों का आप सबने लक्ष्य लिया है। ये एक डिसिप्लिन्ड वे में हमें जो करना था, जो शोकेश करना आप चाहते थे, जो दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो ग्राहक को दिखाना चाहते थे, जो बायर को दिखाना चाहते थे, वो सब कुछ करने के बावजूद आपने सारे नियमों का पालन करते हुए इस कार्य को अंजाम दिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। आपके इस इवेंट की सक्सेस के लिए मैं शुभकामना देता हूं। आपने लक्ष्य न रखे हो, इससे भी अच्छे लक्ष्यांक इस अवसर के माध्यम से इंडस्ट्रीज को मिले, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you very much, Shri Parshottam Rupala, for that wonderful address, for your encouragement, for your appreciation of the challenges that we have faced as a council in bringing you IIJS signature and IGJ ME. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, at this point in time, we'd like to bid a very warm welcome to Shri Vipul Bansal, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, who has just joined us. I'll request the Chairman of the Council, Mr. Colin Shah, to kindly felicitate and welcome Shri Vipul Bansal. Thank you, gentlemen. I shall now request our guest of honor, Srimati Darshana Jardosh, Honorable Minister of State for Railways and Textiles, Government of India, to share her thoughts with us. Ladies and gentlemen, Srimati Darshana Jardosh. सभी को नमस्कार। ज़्यादातर पॉलिटिकल फंक्शन में जो लीडर होते हैं वो लास्ट में बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा उल्टा चल रहा है। पीयूष जी ने पहले बताया, रूपाला जी ने मार्गदर्शन दिया, तो इसके बाद में शुभकामना के सिवाय और कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मंच पर उपस्थित रूपाला जी के साथ हमारे संसद के साथी गोपाल जी, कोलिन जी के आमंत्रण से आए और कोऑर्डिनेट किया दिनेश जी ने, और विपुल भाई से भी पहले जेम एंड ज्वेलरी से बहुत सारी बातें होती रहती थी दिल्ली में जब से हम लोग गए हैं तब से, और सव्यसाची जी को तो पता ही है, और विपुल जी अभी हमारे बीच में जुड़े। सभी डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सभी को नमस्कार। फिज़िकली ये एग्जीबिशन की IIJS को मेरी बहुत बहुत शुभकामना। मेरी शुरुआत में इसी बात से करूंगी कि आज़ादी के बाद में 75 साल के इस सेलिब्रेशन में अमृत महोत्सव के काल में जो बजट निर्मला जी ने दिया, ये बजट इतने सालों के बजट के बाद में यही जो गोल्डन हम लोग बोलते हैं उसको, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला बजट, और वही बजट में डायमंड का और जेम एंड ज्वेलरी का उल्लेख हुआ। आज तक कोई भी बजट में डायमंड शब्द का जो जब बजट हम लोग रजू करते हैं वहाँ पे जो पढ़ते हैं वहाँ कभी डायमंड बोला नहीं जाता था। ये बार निर्मला जी ने जब उनका उल्लेख किया तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर का वो सीन मुझे याद है, क्योंकि ज़्यादातर मैं डायमंड ज्वेलरी को, डायमंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करती थी, तो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे, और कस्टम ड्यूटी की बात आई तो लोगों को लगा कि ये बहुत कुछ मिला, और बहुत कुछ मिलना बाकी भी है शायद, क्योंकि दिनेश भाई मेरे सामने देख रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी जब पहली शुरुआत 2009-10 में किया था कि डायमंड के ऊपर उनका कस्टम के अंदर हाइट शब्द लिखना लिख गया था, तो वो काम मैंने फॉलोअप किया था, शुरुआत वहीं से करी थी मैंने कि कस्टम के अंदर हाइट नहीं लिखा था, और उसकी वजह से ये ज़ीरो बैलेंस करके बहुत सारी ड्यूटी यहाँ पे भराई जाती थी। तब से लेके आज तक इंडस्ट्री के लिए जो जो बातें थी, कोलिन भाई को भी पता है, उन्होंने जब निर्मला जी को जो भी हमारे इश्यूज़ थे, उनके पहले जो भी चेयरमैन थे वो आते रहते थे, और इसके साथ में जब इश्यू हम लोग करते थे तो डायमंड इंडस्ट्री में इतना सारा हम लोगों ने समझ लिया, तो मुझे लगा कि ये इंडस्ट्री को प्रमोट करते करते पार्लियामेंट में भी एक इमेज बन गई, और निर्मला जी को भी इतना फॉलोअप किया तो उनको लगा कि ये ज्वेलरी की बात आती है तो हमें उस तरफ देखना चाहिए। लेकिन 2% वाली लेवी की बात अभी तक बाकी है, और जब जब इशू आते हैं तो लगता है कि ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन नई नई कुछ बातें आती रहती है। लेकिन बिज़नेस को ग्रो करने के लिए हम लोगों को जो सपोर्ट गवर्नमेंट को देना है वो बहुत अच्छे से दे रहे। जिस तरह से ग्लोबल मार्केट को कैच करने के लिए ये इंडस्ट्री के ऊपर जो सरकार की अपेक्षा है वो आप बहुत अच्छी तरह से उनको पूरा कर रहे। और एक एग्जांपल मैं दूंगी, सिर्फ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच यही थी कि ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेक इन इंडिया को किस तरह से हम लोग आत्मनिर्भर भारत किस तरह से बने, तो सभी सेक्टर को बहुत अच्छे से बातें करते थे। एक बार उन्होंने 15
कंट्रीज़ के एम्बेसडर के साथ बातें करी और 500 जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग अलग अलग जगह पे वर्चुअली जुड़े थे और वहाँ पे एम्बेसडर के माध्यम से हम लोगों को बोला गया, पूछा गया कि क्या बिज़नेस होना चाहिए, क्या हर्डल्स आती है, गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट करना है, क्योंकि जब भी बजट तैयार होता है या तो इशू आते हैं तो बातचीत से उस समस्या का हल निकलता है। तो 15 जो भी एम्बेसडर से बातें करी हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ के, इसमें से 10 से 12 एम्बेसडर ने बताया होगा कि हमारी कंट्री में जेम एंड ज्वेलरी की बहुत सारी संभावना है वो बिज़नेस के लिए और क्या क्या उन लोगों को करना चाहिए। तभी ये पता चला कि पूरे एक्सपोर्ट में और ग्लोबल मार्केट कैच करने के लिए ये इंडस्ट्री कितना सपोर्ट करती है। जैसे पीयूष जी ने बताया, उनके मार्गदर्शन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा टारगेट दिया गया है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान जिस तरह से 3 बातें आती है तो कपड़े के ऊपर भी टैक्स के द्वारा बेनिफिट के माध्यम से ग्लोबली मार्केट क्या होता, क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा बातें करी गई। डायमंड के इस ऐसे शोज़ गुजरात में, सूरत में बहुत सारे होते हैं, बहुत बार हम लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया, क्योंकि जिस तरह से यहाँ भारत बुर्स है वहाँ हमारा हीरा बुर्स भी अभी तैयार होने जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक थे, दोनों बिजनेस भी साथ में चलते थे, लेकिन 90% ऑफ डायमंड एंड जो उसकी प्रोडक्शन, कटिंग एंड पॉलिशिंग सूरत में होती है। और तब से 12 साल जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तभी से बोलते थे कि आप लोग अपनी ब्रांड बनाइए, आपका कैसे मार्केट कैच करना है, फ्यूचर क्या है, उसके बारे में आगे सोचिए। और उसी दिशा में मुझे लगता है कि ये पूरी इंडस्ट्री आगे जा रही है। जेम एंड ज्वेलरी के साथ में अब जो विश्वास की बात होती है, सरकार के प्रति भी ऐसा ही है, सबका साथ सबका विश्वास, उसके साथ में विश्वास के साथ में अब सबका प्रयास है। तो आप लोगों की इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ी बात है यही होती है कि विश्वास कायम हासिल करना है लोगों का, कस्टमर का। और जिस तरह से आज इस एग्जीबिशन में पूरे देश में विदेश से भी लोग आ रहे, तो आप लोगों को मैं शुभकामना देती हूँ कि हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट ज्वेलरी है, और रूपाला जी और पीयूष जी बार बार बोल रहे थे कि ये पुराने काल में, विष्णु पुराण में और महाभारत में बहुत ज्वेलरी का है उल्लेख, लेकिन मैं समझती हूँ कि हम महिला आबादी की आधी है, और जब तक महिला है वो ज्वेलरी पहनेगी, या सिल्वर की होगी, गोल्डन की होगी, या डायमंड की होगी। और वैसे आदिवासी क्षेत्र में भी हम देखते हैं, वहाँ पे भी मेटल या कई तरीके की ज्वेलरी, क्योंकि श्रृंगार का एक जो माना गया है, और जब फिजिकली एग्जीबिशन होता है, जब तक ज्वेलरी को हाथ में पकड़कर पहनकर देखा नहीं जाए तब तक वो खरीदती नहीं महिला। तो ये फिज़िकल शो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, B2B, B2C के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बहुत सारे लोग विजिट भी करेंगे और कंपटीशन भी बढ़ेगी कि क्या अच्छा बना है। बिजनेस सीक्रेसी भी होती है सब में, मैंने जो बताया, मैंने जो बनाया ऐसा दूसरा कोई ना बना ले, ऐसा भी होता है। तो ये पूरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप लोग बहुत अच्छे से करें और बहुत अच्छे से, ये पहली बार मुझे यहाँ के एग्जीबिशन में आने का मौका मिला। वैसे वाइब्रेंट गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने सूरत को बहुत बार मौका दिया और आप लोग ज़्यादातर सूरत आते थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ पे मुंबई में आए हैं, और मुंबई में ये शो के माध्यम से किस तरह से ये पेंडेमिक सिचुएशन के बाद में ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और आप सभी को दिल्ली का इसलिए मैं इन्विटेशन देती हूँ कि ज्वेलरी, जेम एंड ज्वेलरी या कोई भी आपके इश्यूज़ के लिए गोपाल जी, हम लोग सदा वहाँ रहेंगे, और हम लोग आने वाले समय में भी इसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर आप भरोसा करके, जिस तरह से सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में उन्होंने आप लोगों को सपोर्ट दिया है, जो टारगेट दिया है वो पूरा करने का संकल्प हम ये आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में करेंगे। जय हिंद। Thank you very much, Srimati Darshana Jardosh, and thank you for your gracious presence here, your kind sentiments, and your very kind offer to continue supporting all our endeavors, especially in our need. Thank you very much, ma'am. Ladies and gentlemen, I shall now request Shri Gopal Shetty, Honorable Member of Parliament, to address us. Ladies and gentlemen, Shri Gopal Shetty. नमस्कार। GJEPC के चेयरमैन कॉलिन शाह जी, वाइस चेयरमैन विपुल भाई, संस्था के अन्य
पदाधिकारी, हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हमको मार्गदर्शन किया, ऐसे पीयूष भाई, पुरुषोत्तम भाई, दर्शना बहन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपके इस इवेंट्स को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 2 साल के एक लंबे गैप के बाद में हम सब लोग एक साथ में आने का यहाँ पर प्रयास आप सब लोगों ने मिलकर किया, और जब मैं एंटर कर रहा तो देख रहा था कि उसको बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। पीयूष जी ने, पुरुषोत्तम भाई ने बहुत विस्तृत में जानकारी दी। दर्शना बहन मंत्री बनने के बाद में पहली बार उनका भाषण सुनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट में गए 7.5-8 साल में दर्शना बहन को बहुत बार सुना, और शुद्ध हिंदी गुजराती टच के बगैर जो उनका भाषण है उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। दर्शना बहन का अपना एक भाग्य भी है कि उनको 0 आवर भी बहुत लगता था। 0 आवर के बावजूद बजट के भाषणों में भी आपके इंडस्ट्री के बारे में बहुत बार वो भाषण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहती थी, और आज भी उन्होंने विस्तृत में हम सबके सामने जानकारी रखी है। पुरुषोत्तम भाई का तो मोदी जी के साथ में टच होने के वजह से बहुत सारी बातें वो पहुंचाते भी है, और मैं खास करके आज उनको सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे महिलाओं का शरीर में ऑर्नामेंट आने के बाद में उसकी खूबसूरती बढ़ती है, वैसे पुरुषोत्तम रूपाला जी को आपको एक कार्यक्रम में बुला तो भाषण के माध्यम से कार्यक्रम की जो शोभा और खूबसूरती है वो बढ़ जाता है। इसलिए मुंबई में जब कभी भी आते हैं तो उनको सुनने के लिए मैं पहुंच जाता हूं। निश्चित आपके इंडस्ट्री का देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी टारगेट आपको दिया है वो टारगेट आप क्रॉस करके आगे जाएंगे, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा एक योगदान है। आप सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से ही रेवेन्यू उपलब्ध करके तो देते ही हो, लेकिन साथ साथ में बड़े पैमाने पे सामान्य लोगों को जॉब देने का काम आप सब लोग मिलकर करते हो। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री की जो घोषणा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें विश्वास का अगर सब्जेक्ट को हम चुनेंगे तो मैं किरीट भाई के साथ में बहुत बार बीकेसी में कुछ ऑफिसों में गया हूँ, तो इतने कॉस्टली हीरे का पैकेट हीरा तो हीरो ही होता है, उसको सामान्य लोगों के पास से दे के एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने का जो विश्वास का काम आपके इंडस्ट्री ने किया है, इसका तारीफ करने से भी ये पूरा नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कोई अगर कॉर्पोरेटर बन गया तो वो उसको एक आधा पुलिस लगता है आने जाने के लिए, लेकिन आप लोग इतना बड़ा टर्नओवर किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी के बगैर करते हो, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और मोदी जी का जो सपना है कि सबका विकास विश्वास के साथ में हम सबको काम करना चाहिए, वो आप सब लोग मिलकर पहले से ही करते हो। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री का जो सपना है अधिक से अधिक लोगों को जॉब देने का, वो काम आपकी इंडस्ट्री आने वाले दिनों में करेगी, ऐसा भावना व्यक्त करता हूँ। और स्वाभाविक है कि मैं शैलेश भाई से पूछ रहा था कि भाई जीएसटी तो आप लोग भर ही रहे हो, और सरकार के तिजोरी में जो इतना बड़ा जीएसटी आ रहा है उसमें बहुत बड़ा एक भाग आपके इंडस्ट्री से ही है। और हमारी देश की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि सरकारी दरबार में जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी हमको मिले उसका प्रयास करते हैं, और आपकी एक इंडस्ट्री ऐसी है कि कोरोना के काल में भी उसको जीवित रखकर जीडीपी को जीएसटी को 1,40,00,000 तक पहुंचाने का काम आप सारे इंडस्ट्री के लोगों ने किया है। यही हमारे भारत देश की सबसे बड़ी ब्यूटी है और खूबसूरती, ऐसा मैं मानता हूं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लोगों ने देश को हमेशा आगे बढ़ने का,
अवसर प्रदान करके दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इन दिनों में हमारा जो व्यापारी वर्ग है वो किसी भी भय के बगैर आगे बढ़े, कामकाज करे, इस दिशा में हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रूपाली जी के माध्यम से मुझे भी ये डायस शेयर करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, इसलिए आप सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। Thank you very much, Shri Gopal Shetty, for your presence here and for your warm sentiments that you've so beautifully expressed. Ladies and gentlemen, I shall now request Shri Vipul Bansal, our guest of honor, Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, to address us. Ladies and gentlemen, Shri Vipul Bansal. Good morning, everybody. Honorable Ministers, Rupala sir, Jardosh ma'am, Honorable MP, Colin sahab, Vipul Shah ji, Shailesh ji, everybody on the dais, Sabyasachi, all the members of the trade present here. I would just like to say a few things. What all जो भी मैंने सोचा था बोलने के लिए वो सब already बोला जा चुका है. So I will not repeat. I will just say a few things. In November, I took charge of the Joint Secretary in Department of Commerce. This is my first visit to Mumbai after taking charge as Joint Secretary. I had the pleasure of going to the EPC office and the diamond bourse. I also went to SEEPs and visited a few factories. And I would like to unequivocally say that the diamond trade, the gems and jewelry trade, is the most organized, disciplined, sophisticated, and very cohesive body. And through the Export Promotion Council, you are most effective in putting up your demands in an orderly fashion before the government. And the result is for all to see. The government has accepted some of your demands. Lots of your demands are still not accepted. They are still in the works, in the pipeline. And with each demand, the council has this habit of, saying that, अगर ये आप मेरी बात मान लेंगे तो इतना एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ये आप मान लेंगे तो डबल हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा. So now few of the demands have been met. And इस बार का जो टारगेट रहा है, जो अब सरकार ने टारगेट फिक्स किया था और जो अचीवमेंट होगा वो टारगेट से कम रहेगा. So जो भी वजह हो उसकी बहुत सारी वजह हैं, बट जो सरकार ने डिमांड्स मांगी हैं और जब काउंसिल ने रिप्रेजेंट किया था सरकार को इस डिमांड की मांगने पे इतना बढ़ेगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द इंडस्ट्री, द ट्रेड एक्चुअली स्टैंड्स अप फॉर इट. सो जैसे जैसे वो अचीव होता रहेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. एंड देन बिकॉज कुछ भी अगर सरकार देती है तो इट्स अ जीरो सम गेम समवेयर और द अदर. अगर आपको कुछ मिलता है तो कोई उससे इफेक्ट होगा. तो एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी फ़ायदा ज़्यादा किस में है, नुकसान कम से कम किस में है. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी. Now this is something which is the ministers, or honorable minister has spoken about. Both the ministers here have spoken about. I would request you to think about it, and all the pending demands that are there, please do not give up hope. We are hoping that as and when the progress is shown, our hands are strengthened to actually push and accept all those demands. With all this, I would just like to say thank you all for having me, from the council, from the trade, and all the best for the post-COVID world. And we are hopefully now not going to face a crisis of a COVID crisis that we faced in the past. And you will have one good full 22 to 23 year to make up for the lost market, make up for the lost sales, and actually contribute to the nation as such. Thank you. Jai Hind. Thank you very much to our guest of honor, Joint Secretary, Department of Commerce, Government of India, Shri Vipul Bansal, for those very encouraging sentiments. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, may I now request Shri Shailesh Sangani, convener, National Exhibitions, GJEPC, to kindly propose a brief vote of thanks. Mr. Shailesh Sangani. Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of Commerce and Industry, Textiles, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India, Shri Parshottam Rupala, Honorable Union Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairies, Government of India, Srimati Darshana Jardosh, Honorable Minister of State and Railway Textiles, Government of India, Shri Vipul Bansal ji, IIJS,
Joint Secretary, Department of Commerce. Of course, my colleagues, Colin Shah and Vipul Bhai, and Sabyasachi Ray, Executive Director, JPC, my colleagues from COA, friends and media partners. Good afternoon. I think it's afternoon. Yes, good afternoon. So due to the surge in COVID, we had to, what we had originally planned, the exhibition to happen in January, now we had to move it to February. And we have done this whole exhibition within a very short time, in a record time, in a stretch of 21 days. We have been able to do what you see or what you will be seeing in the coming next 4 days. So for that, I would like to thank first all my participants, the 900 plus companies which are participating today in the show, some with them 1,450, 470 booths over here. And of course, the thanks to all the visitors who are going to be coming over the next 4 days. So we are expecting more than some 700 visitors from international sector, and we are expecting more than 15,000 visitors from the domestic sector. So I would like to welcome all of them and thank all of them for joining us in a very short notice period. So having said that, I would also like to specially thank Piyush Goyal ji, our Honorable Minister of Commerce, to helping our sector and always encouraging our sector all the time. I would like to thank Shri Parshottam Rupala ji, Honorable Minister of Fisheries and Animal Husbandry, Government of India, presence of making this momentous occasion very special. Darshana Benji, Honorable Minister of State for Railways and Textiles, Government of India. Thank you, Madam. You have always forthcoming to support the sector and taking the issues of the sector with the concerned authorities in the Government of India. Somewhere I forgot Mr. Gopal, Shetty ji. Gopal ji, sir, thank you very much. Of course, Mr. Vipul Bansal, thank you, sir, for your presence over here. And I'm very sure, sir, that you are going to enjoy this exhibition since you have taken up the charge. I think this must be one of your first exhibitions that you will be attending. I would like to specially thank Colin over here and Vipul Bhai for always encouraging us from this last 2 years that we have gone through this COVID, this whole sector has gone through this COVID, and especially the exhibition sector, which I take care of, and the amount of encouragement that I have received from both of them is, I don't have enough words to thank you people for that. And of course, special thanks to Sabyasachi. I can't see him somewhere anywhere, but of course, without him, I think most of the council will not be able to work. So thank you, Sabyasachi, and the complete team of under him, the whole organization. Thank you very much. And I would like to special thank all the media, though I had met most of you all just 2 days ago, but I thank you one more time for giving your best to this industry and helping us to publish this industry across the world. Thank you very much, everyone. Thank you for coming here. Thank you for your time. Ladies and gentlemen, warm round of applause for Mr. Shaili Sangani, convener National Exhibitions Gem and Jewellery Export Promotion Council. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of the inaugural function of IIJS Signature and IIJS 2022. We wish you a richly rewarding 4 days ahead and thank you for your gracious presence here.